नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची गोटे नुआ वीडियो को आपण मैंने केमती अच्छा आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते बहुत ही भल थे मु बहुत ही भल अच्छी तो आपण मैंने जब चैनल नुआ अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ आमे पूर्वर पढ़ी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स रो किछटा पार्ट्स और बाकी रही जाइए जोटा कि मु आज स्टार्ट करी तो ये चैप्टरटा बहुत टिके इम्पोर्टेंट अच्छी आउ जो चैप्टरटा पढ़ो पूरा माइंडफुली पढ़ भलसे बुझिके पढ़ तो इजी लगे सब Majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents. Bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds, and bats are the common pollinating agents. तो एटा कौन पॉलिनेटिंग एजेंट्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या कह जाए ना जो मैंने पॉलिनेशन करिवारे साहाय्य करती जमी है बटरफ्लाई है जमी बटरफ्लाई कौन कर ना मेल गैमेट फीमेल गैमेट भर पॉलिनेशन कराए कि ना बटरफ्लाई कराए विंड द्वारा हो पारे बायोटिक एजेंट हो पारे अबायोटिक एजेंट्स हो पारे तो किछिटा भी हो पारिबो है Among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agents. माने dominant biotic pollinating agent किए ना bees उड़ा हो सब कौन dominant biotic agent okay dominant biotic pollinating agent है तो even larger animals such as some primates, lemurs, arboreal tree-dwelling rodents, or even reptiles have also been reported as pollinators in some species. किछटा species रे एई माने भी pollinating agents भाबरे निजको माने बिहेवियर करथांती बा pollinating agents हेइथांती है often flowers of animals pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals. Majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant, and rich in nectar. When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. Animals are attracted to flowers by color and or fragrance. The flowers pollinated by flies and beetles secret fall odors to attract these animals. माने से कहला कि flowers मानकर pollinated by flies and beetles केमिति हुए से माने किछि सीक्रेट करि थांती ऑर्डर बा स्मेल वाला किछि जोडा कि से मानको अट्रैक्ट करे फ्लावर्स आडकू हैला To sustain animals, visits the flowers have to provide rewards to the animals. Nectar and pollen grain are the usual floral rewards for harvesting the reward. Okay. Provide the rewards to the animals. Nectar and pollen grains are usually floral rewards. For harvesting the reward, from the flower, the animal visitor comes in contact with the anthers and the stigma. Contact हुए क्या भीतर ना anthers 1 minute anthers आउ stigma भीतर से कौन करे contact करे हेले contact with the anthers and stigma. The body of the animals gets a coating of pollen grains which are generally sticky in animal pollinated flowers. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. In some species, floral rewards are in providing safe places to lay eggs. An example is that of the tallest flower of Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in height. A similar relationships exist between a species of moth and the plant Yucca, where both species moth and the plant can't complete their life cycles without each other.
moth ଆଉ plants ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ କେବେ କାହା ବିନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରେ ନା। The moth deposits its eggs in the locule of the ovary. ମୁଁ କହିଥିଲି ଓଭାରିରେ ଅଛି ଓଭ୍ୟୁଲ୍, ଓଭ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଲକ୍ୟୁଲ୍। Ovary and the flowers in turn get pollinated by the moth. The larvae of the moth come out of the egg as the seeds start developing. Why don't you observe some flowers of the following plants or any other available to you? Cucumber, mango, pipal, coriander, papaya, onion, lobia, cotton, tobacco, rose, lemon, eucalyptus, banana. Try to find out which animals visit them and whether they could be pollinators. You will have to patiently observe the flowers over a few days and at different times of the day. से कहला कि तमे माने ऑब्जर्व करि परिबो कुकुम्बर हैला, मैंगो हैला, पिपल जोड़ा माने अदर अवेलेबल माने तम पाखे जोटा अवेलेबल होछ तमे सेटा देखिबो हैला। You could also try see whether there is any correlation in the characteristics of a flower to the animal that visit it. किछटा कोरिलेशन अछि काका भितर आ फ्लावर आ एनिमल्स भितर, ठीक अछि। Carefully observe if any of the visitors come in contact with the anthers and the stigma, as only such visitors can bring about pollination. जदि भी कहीं भी कौन से भी एनिमल्स विजिट करिया पई आसुची आंथर किंबा स्टिग्मा को केवल पॉलिनेशन पई ही सेटा आस्तबो, सेटा सिंसिक बा केयरफुली सेटा देखिबो, ठीक अछि। Such floral visitors are referred to as pollen nectar robbers. You may or may not be able to identify the pollinators, but you will surely enjoy your efforts. Okay. Outbreeding devices. Outbreeding कौन अछि देखिबा। Outbreeding devices. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers, and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Continued self-pollination pollination result in inbreeding depression. Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. से कहला कि flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage self-pollination को discourage करिया पई discourage करिया पई आउ cross-pollination को encourage करिया पई. In some species, pollen release and stigma respectively are not synchronized. किछिटा स्पेसीस रे कौन हुए ना पोलेन रिलीज हो जाए और स्टिग्मा सिंक्रोनाइज्ड हुए नहीं. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen. से कहला कि जदि स्टिग्मा रिसेप्टिव फॉर्म को आसी न तो ता पूर्व जदि पोलन ग्रेन से तार रिलीज कर दो तो देन से एनकरेज सिंक्रोनाइज्ड करि परिबो नाही. In some other species, the anther and stigma are placed at different positions so that the pollen can't come in contact with the stigma of the same flower. Both these devices prevent autogamy. इस device को कौन कहते हैं? Autogamy. The third device to prevent inbreeding is self-incompatibility. This is genetic mechanism and prevents self-pollen from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. Another device to prevent self-pollination is the production of unisexual flowers. If both male जदि से कहला कि another device to prevent self-pollination is production of unisexual flowers. जदि self-pollination हैला ताले से कह unisexual flowers. If both male and female flowers are present,
or if both male and female flowers are present on the same plant, such as castor maize, it prevents autogamy but not getnogamy. এটা ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ ଯଦି ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଟ୍ରିରେ ଥିବେ ବା ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଥିବେ, ତ ସେଟା କ'ଣ କରାହେବ ନା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ ଅଟୋଗ୍ୟାମି, କିନ୍ତୁ ଗେଟନୋଗ୍ୟାମି ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ ସେଭେରାଲ୍ ସ୍ପେସିସ୍ such as papaya, male and female flowers are present on different plants. तो तापर कौन है ना से कहला कि केवल आम जमी देखा कि पपेया प्लांट रे कौन हुए ना मेल फ्लावर तार अलग थाए, फीमेल फ्लावर तार अलग थाए, माने सेपरेट प्लांट थाए ना कि गोटे ट्री रे सेपरेट ट्री थाए आउ सेपरेट फ्लावर भी थाए आउ सेपरेट फ्रुट्स भी हुए। जेहेतु सेपरेट फ्लावर रोचे सेपरेट प्लांट रोचे तो ऑटोमेटिकली सेपरेट फ्रुट ही रहिबो। बुझिला। Male and female flowers are present on different plants, that is each plant is either male or female dioicy. This condition prevents both autogamy and getnogamy. ये condition टा prevent करूची कौन autogamy की prevent करूची आउ getnogamy की prevent करूची। आमे देखिए है pollen pistil interaction। कौन एटा pollen pistil interaction कौन एटा को हम कहि परबा stamen pistil interaction। काहे कि नो काहे कि कहि परबा नै पोलेन कौन पोलेन ग्रेन कौटू आस स्टेमेन रे ही रोचे। पिस्टिल माने कौन आमर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो तांको भितर केमिति इंटराक्शन होची आमे सेटा देखिबा। तांको इंटराक्शन टाको आउ गोटे कहते कौन ना आमर पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलेन compatible pollen of the same species as the stigma. Often pollen is the pollen of the wrong type either from other species or from the same plant also land the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type or of the wrong type, compatible or incompatible ହେଇଥାଉ। If it is the right type, the pistil accept the pollen and promotes post pollination events that देखो एटा एटा पोलेन ग्रेन आसीबो आसी कौन हम ना एठी रहबो हैला पोलेन ट्यूब रे। Leads to fertilization. If the pollen of the wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style। तब से कहला कि फास्ट आसो कौन इफ द पोलेन ऑफ द रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट्स द पोलेन बाय प्रिवेंटिंग पोलेन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलेन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल ऑटोमेटिकली पोलेन ट्यूब ग्रोथ हैला। द एबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस dialogue between pollen grain and the pistil. This dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. It is only in recent years that obtains have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection। माने सेटा गोटे अच्छी केमिकल गोटे अच्छी पिस्टिल रे जहाँद्वारा कि से जापर जे यहाँ मैंने एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेबल रिजेक्ट करहब ना एक्सेप्ट करहब। As mentioned earlier, flowers are following compatible pollination. The pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. The contents of the pollen grain move into the pollen tube. So कहला कि sorry, the contents of the pollen grain move into the pollen tube। जति तो थाए pollen grain रे contents उड़ा सब कौन करे pollen tube को move हो जाए। Pollen tube grows through the tissue of the stigma and style and reaches the ovary.
से कहला कि से लंबी जाए कहा द्वारा ना स्टिग्मा आउ स्टाइल द्वारा बढ़ी जाए, बढ़ के कौन हुए ना ओभारी पाखे जाके पहुँची जाए, ओभारी पर्यंत लंबी जाए. यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर सेड एट टू सेल्ड कंडीशन. दुटा सेल तार गोटे है वेजिटेटिव आ गोटे है जेनेरेटिव सेल. इन सच प्लांट जेनेरेटिव सेल्स डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द टू मेल गैमेट्स. माने जो आम कर भेजिटेटिव गोटे जेनेरेटिव गोटे मैं स्ट्रक्चरटा भी देखा दूसरे आउ थे मन पड़ो कि नहीं तुम मानकर वेट. ये आसो एटा 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 हूँ भेजिटेटिव सेल, एटा हूँ जेनेरेटिव सेल. ए जेनेरेटिव सेलटा डिवाइड हम. ओके मन रखी था स्मॉलटा है जेनेरेटिव, बिगटा बा लार्जटा है आमर भेजिटेटिव सेल. ओके the generative cell divides and forms the two male gametes. माने generative cell टा कौन हम ए जो तले जो generative cell टा एटा डिवाइड है कि कौन हम दीटा मेल गैमेट देबो. एठी गोटे मेल गैमेट, एठी गोटे मेल गैमेट. ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब द स्टिग्मा माने जो पोलन ट्यूब को जाउथो स्टिग्मा पाखरे हेतो तो से कौन करबो ना जेनेरेटिव सेल टा डिवाइड हे जो. इन प्लांट सच सेड पोलन ट्यूब in plants which shed pollen in the three-celled conditions, pollen tubes carry two male gametes from the beginning. Starting ru se kon kare dita male gamete nei ke jae. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule. ओभारी रिच करके तो ओव्यूल को जीव थ्रू द माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइलर एंड गोटे आम पढ़ी कौन चालाजेल एंड माइक्रोपाइलर एंड एमती थी देखीदेव यहाँ. Micropyle and enters one of the synergies through the filiform apparatus. जो आम देखी आम कौन ना ये जो थी आम filiform apparatus synergid. ओके मन पड़ू तो filiform apparatus. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guides the entry of pollen tube. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. जितेबाला पर्यंत माने until जो माने स्टिग्मा रू pollen tube टा जाके एंटर करियो ओव्यूल पाखरे तापर हम तो कह कि pollen pistil interaction. As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrids. You can easily study pollen germination by dusting some pollen from pollen such as pea, chickpea, crotalaria, balsam and vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution. After about 15 to 30 minutes, observe the slide under the low power lens of the microscope. You are likely to see pollen tubes coming out of the pollen grains. जेतेबेले pollen grains को से छाड़ के कौन करिवो ना pollen grain को छाड़ दो pollen tube टा remove हो जावा बाहर आसीबो. A breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characteristics to produce commercially superior varieties. Artificial hybridization कौन आम जानिबा एटा होच it is one of the major approaches of crop improvement program. In such crossing experiment it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination.
from unwanted pollen. This is achieved by emasculation and beginning techniques. If the female prevents parents bears bisexual flowers, removal of the anther from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary. This step is referred as emasculation. Emasculated flowers have to be covered with a bag or suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. This process is called bagging. When the stigma of bagged flowers attains receptivity, mature pollen grains collected from anther of the male parent are dusted in the stigma and the flowers are rebagged and the fruits allowed to develop. माने तापर कौन करिवो ना से फ्रूट का अलाउ करिवो डेवलप होगा पई तो प्रोसेसटा टोटाली आसीबो पोलन ग्रेन आसीबो पोलन ग्रेन आसिकी कौन करिवो ना स्टिग्मा रे रहिबो कहा साहाଯ୍ୟରେ किंबा कोनोसी बटरफ्लाई हैला कि जहाँ भी साहाଯ୍ୟ हनी बीज हो जहाँ भी साहाଯ୍ୟରେ हो से आसिकी सेठी पहुँचला पर स्टिग्मार ऊपर थाई गोटे स्टिकी टाइप रो जोटा कि पोलन ग्रेन को से चिपकेकी रखिबो बा अठा टाइप रो गोटे थाए सेटा चिपकेकी रखिबो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा देहरे तापर कौन हबो आस्ते आस्ते पोलन ग्रेन कौन करिवो ना पोलन ट्यूब टे बाहर करिवो जेमति कि देखो एठी मु कहि दउ चित्रटे एमती थी एटा स्टिग्मा ये आसिक बस पोलन ग्रेन ये तार पोलन ग्रेन बसला से आस्ते आस्ते एमती बाहर कर कौन कर ना यहाँ स्टिग्मा यहाँ स्टाइल यहाँ हूँ स्टिग्मा यहाँ स्टाइल एमानकर टिश्यू को नहीं कि सी डेवलपमेंट है कि कौन कर ना जीव क्या पाखक ना आमर ओभारी पाखक जीव ओभारी पाखक जाए ओव्यूल पाखे पहुँचे से कौन हम ना पोलन ट्यूबटा छिड़ी माने बाहरी जीव पोलन ट्यूबटा बाहर तो कौन कर ना पोलन ग्रेन जीव कौटी आगे एंट्री करे माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर ऊपर रोचे आमर चालाजाल एंड माइक्रोपाइलर एंड रे जो थिला आमर केतेटा हेटा 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज जो थिला से स्टेज रे थिबा आमर कि ओभारी ये जीव सिनर्जिड पाखरे जाएंगे जो पोलन ग्रेन जाएंगे सेठी रहइबो तापर कौन हम से डिविजन हो सारा पर सिनर्जिड पाखरे डेवलपमेंट हो सारा पर तापर से फ्रूट रे कन्वर्ट हम बुझेला। If the female parent produces unisexual flower, there is no need for emasculation. The female flower buds are bagged before the flower open. When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the pollen flower rebagged. डबल फर्टिलाइजेशन गोटे लॉन्ग क्वेश्चन से आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िया तो एतिकी जदि कहार बुझी न हो कमेंट सेक्शन में जनातु ये स्ट्रक्चर देखते स्ट्रक्चर निजे जानी भी पारे यहीटा फिलीफॉर्म apparatus मेल गैमेट ये आसला आसिक फिलीफॉर्म apparatus रे रहइबो सिनर्जिड एटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटी सेंट्रल सेल अच्छी एग न्यूक्लियस अच्छी तो ये आसिक से डेवलपमेंट के पोलार न्यूक्लिय देखते ये पोलार न्यूक्लिय पाखे आसिक एमती हम एमती है सेठू कौन हम ना वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड कला दीटा मेल गैमेट्स रे तो आप डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा एला गोटे मेल गैमेटोफाइट मन रख लॉन्ग क्वेश्चन गोटे है मेल गैमेटोफाइट गोटे है फीमेल गैमेटोफाइट गोटे है आमर डबल फर्टिलाइजेशन है मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट आ गोटे है डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ हूँ लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तुम आसीपर जेटनोगामी ऑटोगामी जेनोगामी तो यही सब पॉलिनेशन यही सब शॉर्ट नोट आसीपारे तो यही गोटे क्वेश्चन वीडियो टोटाली चैप्टर केतेटा क्वेश्चन पॉसिबल तो टोटाल सब क्वेश्चन रो आंसर सहित मुझे आनीदेवी तो आपण मैंने मो चैनल रे जोड़ी ही रुहतु जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखर था बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँद्वारा कि आपण पाखरे सर्वप्रथम वीडियो जाकि पहुँची पार तो से पर्यंत रोचे धन्यवाद।